गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ओपन ऑफर। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि अदानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी को जो है एक्वायर करने के लिए ओपन ऑफर दे रहा है। अब ये टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि ओपन ऑफर क्या होता है। बाकी चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स, बट जस्ट बिकॉज कि आपको समझ आ जाए ओपन ऑफर क्या होता है तो हमको थोड़ा सा डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी अदानी ग्रुप ने अगस्त में एनडीटीवी के लगभग 29.18% का स्टेक जो है एनडीटीवी में खरीद लिया है। अब वो बाकी का जो है स्टेक लगभग 51% स्टेक टोटल खरीदना चाहता है। उसके लिए 26% जो है स्टेक जो है उसके लिए वो ओपन ऑफर दे रहे हैं। अब उस ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी, समझ लो इस केस में अदानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर देती है, तो वो ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप अगर इस कंपनी से एग्जिट होना चाहते हो तो हम आपको इस प्राइस पे आपके शेयर खरीदने को तैयार हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है कंपनी को जब मैनेजमेंट उसका कंट्रोल करना चाह रहे हो, समझ लो अदानी इस टाइम पर सबसे बड़ा जो है अदानी ग्रुप जो है सबसे बड़ा एनडीटीवी का शेयर होल्डर हो बन चुका है। तो ऑफ कोर्स जो भी सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल चला जाता है। तो जो बाकी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैनेजमेंट कंट्रोल चला गया, तो उनको एक ओपन ऑफर दिया जाता है कि अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, तो हम आपको इतना प्राइस देने को तैयार हैं, आप इसको एग्जिट कर सकते हो, हम आपके शेयर को ओवरटेक कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में समझे तो यही होता है ओपन ऑफर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PSLV C54। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने रिसेंटली 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी उसके अंदर लॉन्च की गई है और इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C54 का यूज़ करते हुए इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये 56th फ्लाइट थी PSLV की। PSLV को 1993 में बनाया गया था इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ने के लिए। तो मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये। और ये आपका इंडिया का जो पहला लूनर प्रोब था चंद्रयान 1, उसमें भी जो है PSLV जो है उसी को ही लेके जाया गया है। और जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो हमारा मंगलयान मिशन था, उसमें भी PSLV का यूज़ किया गया। और जो आने वाला एस्ट्रोसैट मिशन है हमारा, उसमें भी हम PSLV का ही यूज़ करने वाले हैं, है ना। सो सैटेलाइट्स जो लॉन्च की गई हैं वो एक भूटान की सैटेलाइट थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। बाकी जो है आपकी एस्ट्रोकास्ट, थाईबोल्ट, ये सैटेलाइट्स कुछ प्राइवेट सैटेलाइट भी थी, जिसमें एक हमारी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है EOS-6। और अब हम डायरेक्टली इसके बारे में देखते हैं कि इंडिया भूटान की जो सैटेलाइट है INS-2B इसका नाम है। इसमें एक नैनोमैक्स MX लगाया गया जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है। APRS डिजिपीटर लगाया गया है। इंडिया और भूटान के बायलैटरल कोऑपरेशन को दिखाने के लिए ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इसरो जो है भूटान के साथ ऑफ कोर्स काम कर रहा है और एक ग्राउंड स्टेशन भी जो है थिम्फू में, जो उनकी कैपिटल है, वहाँ पर लगाया जाएगा। आने वाले टाइम में इसरो जो है प्लान कर रहे हैं कि वो आदित्य L1 जो आपका सन के ऊपर मिशन होगा, सोलर मिशन होगा इंडिया इसरो का, वो भी प्लान कर रहे हैं। और नाविक जो हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, उसमें भी जो है उसकी 4 सैटेलाइट्स भी आने वाले टाइम में 2023 में जो है उनको लॉन्च किया जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इक्षक। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने इक्षक 3rd ऑफ 4 सर्वे वेसल्स को जो है वो लॉन्च कर दिया है तमिलनाडु से। तो इसका नाम इक्षक है, मतलब हुआ गाइड। इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मिलकर बनाया है। सेफ्टी ऑफ मरीनर्स एट सी इसको इंश्योर करने के लिए ये काम करता है। जो इसकी फर्स्ट क्लास ऑफ शिप है उसका नाम संधायक है, इसको भी हमने पढ़ा था लास्ट ईयर। और SVL शिप्स जो होंगी वो आपके संधायक क्लास सर्वे शिप्स को रिप्लेस करने वाली हैं। 110 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर वाइड है और इनकी मैक्सिमम स्पीड 18 नॉट्स तक पहुंच सकती है और क्रूज स्पीड इनकी लगभग 14 नॉट्स तक होती है। सो एक्सक्यूज मी अगर बीच में बार बार थोड़ी खांसी आए तो जस्ट कोऑपरेट विद मी टुडे, थोड़ा सा आज गला खराब है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑस्ट्रा हिंद 2022। आपका सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 जो है वो शुरू हुई है इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में। राजस्थान में इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो राजस्थान में इसको कंडक्ट किया जाएगा और ये पहली बार हो रही है ऑफ कोर्स एक्सरसाइज। आने वाले टाइम में हर साल ही होगी और ऑल्टरनेटिवली इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में इसको किया जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई कोर्ट इनिशिएटिव्स।
गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पीएम मोदी ने जो है कुछ ई कोड प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जैसा है पहला आपका नाम है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। तो इसमें होगा क्या कि कोर्ट के लेवल पर जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है कि कितने केस इंस्टीट्यूट किए गए हैं, कितने डिस्पोज हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, ये सब जो है इस वर्चुअल जस्टिस क्लॉक पर दिखाया जाएगा। तो बेसिकली कोर्ट की फंक्शनिंग को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। ऐसे ही जस्ट इज मोबाइल ऐप भी जो है वो लॉन्च की गई है। तो जुडिशियल ऑफिसर्स जो होंगे उनको इफेक्टिव कोर्ट और केस मैनेजमेंट देखने के लिए ये टूल अवेलेबल होगा। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, ताकि वो पेंडेंसी और डिस्पोजल ऑफ केसेस देख सकें, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के केसेस को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल कोर्ट। तो डिजिटल कोर्ट है कि जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज फॉर्मेट में जो है जजेस को अवेलेबल कराना, उसका मोटिव है डिजिटल कोर्ट का। और अगला है S3 वास वेबसाइट्स। तो बेसिकली ये क्लाउड सर्विस है जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए बनाई गई हैं, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिल्क डे। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है उन्होंने नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि ये 101st बर्थ एनिवर्सरी है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की। तो नेशनल मिल्क डे जो है हम 26 नवंबर को मनाते हैं इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, जो कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है। इनको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ही जो है एफर्ट से हम फार्मर कोऑपरेटिव्स का जो है इकोसिस्टम इंडिया में बना पाए। और आपको पता होगा कि इन्हीं का ही जो आइडियाज़ को यूज़ करते हुए अमूल जैसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन पाई है। इनको बहुत से अवार्ड्स मिले, रामन मगसेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी इन्हें मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला। ठीक है, तो नेशनल मिल्क डे इसलिए मनाया जाता था कि हम नीड फॉर मिल्क इन ह्यूमन लाइफ जो है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट कर सकें। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया ही देखता है, और लगभग 198.4 मिलियन टन तक इंडिया जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। सो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली चाइना ने फर्स्ट चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम की जो है वो बैठक की है, जिसमें इंडिया को ऑफकोर्स नहीं बुलाया गया। और ये एक तरह से चाइना का एक इनिशिएटिव है कि वो इंडिया के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करना चाहता है। तो चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और 19 कंट्रीज ऑफ द रीजन ने उसको अटेंड किया है। ऑफ कोर्स इंडिया ने अटेंड नहीं किया, क्योंकि इंडिया को बुलाया ही नहीं गया था। लेकिन जिनको बुलाया भी गया था और उन्होंने अटेंड नहीं किए हैं, वो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव्स है। तो इनको बुलाया गया था बट इन्होंने अटेंड नहीं किया, है ना। सो अब चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती जा रही है। आपको पता है इंडियन ओशन रीजन में जिबूती, हम्बनतोता, ग्वादर और मालदीव्स में भी वो अपने प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन इंडिया की प्रेजेंस भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडियन ओशन रीजन की कंट्री है। तो हमने सागर इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च किया, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हमने लॉन्च किया। तो इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में, है ना। सो अब हम देखते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मार्च 1997 में बनाया गया, और इंडियन ओशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पहला नाम था। अब इसका सेक्रेटरीट जो है वो मॉरिशस में है, और ये यूएन जनरल असेंबली और अफ्रीकन यूनियन दोनों में ही ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है। चाइना भी ऑफ कोर्स इसका डायलॉग पार्टनर है, बट फुल मेंबर नहीं है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ देना, बैलेंस डेवलपमेंट करना, रीजन की अपॉर्चुनिटीज़ देना, लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना, और जो भी इम्पेडिमेंट्स या बैरियर्स हैं उनको कम करना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन जो है, उसमें अवार्ड फॉर जो एक्सीलेंस मिलता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। ठीक है, वस्तु संग्रहालय को मिला है। और ये अवार्ड जो है यूनेस्को और नेक टैंग फोंग चैरिटेबल फाउंडेशन 2021 से देता आ रहा है। स्पेशल रिकॉग्निशन भी देना शुरू किया है इसमें, जो कि कोई भी ऐसा कल्चरल हेरिटेज जो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा रही है उसको उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंजर्व करने में या रिस्टोर करने में हेरिटेज वैल्यू की कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो इस साल की अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पर मेंशन की गई है। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को मिला है। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद को मिला है। ऐसे बहुत बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1949 में। जबकि ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को जो है वो इफेक्ट में आया। ठीक है। तो मई 2015 में जब 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर जी की थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स को प्रमोट करने के लिए 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। इससे पहले इस डे को नेशनल लॉ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उनकी पहली सेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उनको 3 साल लगभग लगे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। 13 दिसंबर 1946 को जो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मूव किया गया था, जब हमने प्रियम्बल जो है, जो हमारा बाद में ऑफ कोर्स बना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन ऑफ कोर्स अंबेडकर जी थे, और जो लास्ट सेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 26 नवंबर 1939 को हुआ है। तो इसलिए हम 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जिसको हाथ से भी लिखा गया है, और हर एक पेज पर कॉन्स्टिट्यूशन पर गोल्ड का लीफ फ्रेम बनाया गया है। ठीक है। सो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। So now, let us see all these topics in English. So the first topic is open offer. This topic is important for your economy section. So recently, you know that Adani Group has announced that they will be launching open offer for the stakeholders in NDTV channel. So we do not need to go into the details about the what has happened, or we do not need to check the ball by ball updates, but we have to understand what is an open offer. So you know that we'll understand this topic by this Adani Group and NDTV deal also. So you know that when Adani Group acquired about 29% stake in the NDTV channel. So what happened then is that the Adani Group became the largest shareholder of NDTV. So it obviously means that when you are the largest shareholder, then you get the option of managing the company, or you get the option of appointing your people in the company. So that's what happened. So those people, those shareholders, the rest of the 70% shareholders who were different shareholders, if they do not like the way Adani Group could have been managing the company, so to check that revolt among the shareholders, Adani Group had to offer an open offer, whereby those stakeholders who wish to leave the company, they were given an offer that yes, we are ready to purchase your shares, or 30% of at least shares have been or 26% in this case, 26% stake in NDTV will be acquired by Adani Group. So Adani Group is saying that if you do not like us, if you do not like the way we are going to run this channel, then we are willing to buy your shares at this particular price point. If you want to leave, you can leave, and we will be taking over the 26% stake holding in the company also, so that we'll reach more than 50% shareholding, and we'll get the whole ownership of the NDTV group. Okay, so this is what is open offer. So basically you are asking or you are giving an offer to the existing shareholders that you want, if you want to exit, then we are going to pay you this much price and you can sell your shares to us. Okay, so the next topic is PSLV C54. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently launched 9 satellites. One of them is, of course, the Earth observation satellite into multiple orbits using the PSLV C54. So PSLV is about PSLV. It is the 56th flight of PSLV and 24th flight of PSLV XL version, and it was developed in 1993, which was meant to launch the Indian remote sensing satellites into sun synchronous orbits. Apart from this mission, some notable payloads include India's first lunar probe Chandrayaan-1. Even the Mangalyaan mission was launched through this PSLV, and the India's first space observatory that is being planned to be launched, AstroSat, will also be launched through the PSLV. Okay, so there are there are 8 nano satellites which have been launched. One of them, of course, is ISRO's Bhutan INS-2B, which we are going to discuss now. Rest of the satellites, of course, not important for you, but they are mentioned here. So India Bhutan satellite is a
historic milestone between India and Bhutan's bilateral cooperation, and this has been developed by ISRO, and with the, of course, efforts from Bhutan government. And INS-2B also carries Nano MX, which is a multispectral optical imaging payload. APRS Digipater is also there, and ISRO is also working towards establishment of a ground station in Thimphu, that is the capital of Bhutan. Future missions of ISRO involve Aditya L1, which is of course the solar mission of ISRO, and also next year we're going to launch 4 satellites, which will be supporting the Navik constellation, which is the regional navigation system of ISRO. So the next topic is Ikshak. This topic is important for our security section. So recently, Indian Navy has launched Ikshak, which is the third of the 4 survey vessels, which has been launched from Tamil Nadu. Ikshak means guide, and it has been built by Garden Reach shipbuilders and engineers, and Larsen and Toubro. So it means it is aimed to ensure the safety of mariners at sea. Sandhayak has was launched first. The first of the first class of ship was Sandhayak, and it was launched last year in December. So these ships will replace the existing Sandhayak class survey ships. They are 110-meter long, 16-meter wide, and they can attain a maximum speed of 18 knots and a cruise speed of 14 knots. So the next topic is Ostra Hind 2022. This topic is important for your security section. So bilateral training exercise Ostra Hind 22 has been launched between Indian Army and Australian Army, and it will take place in Rajasthan. So this is the first time this exercise will be held, and it will become an yearly event now. It will be conducted alternatively in India and Australia from now. So the next topic is e-court initiative. This topic is important for our governance section. Recently, PM Modi has launched various initiatives under the e-court project. First, of course, is the virtual justice clock, which showcases the vital statistics of India's justice delivery system at the court level. Means the number of cases that have been instituted, the number of cases which have been disposed, and the pendency of cases, of course. So basically, it aims to make the courts accountable and transparent. The next is Just Mobile app 2.0. It is a tool which will be available to judicial officers for effective court and case management. It will also be made available to high court and supreme court judges, so that they can monitor pendency and disposal of cases at all the states and districts under their jurisdiction. So the next initiative is digital court, and the aim is to make the court records available to the judges in digitized form. The next is S3 WAS websites. So basically, it's a framework to generate, configure, deploy, and manage websites for publishing specified information and services related to district judiciary. It will basically be a cloud-based service developed for government entities. So the next topic is National Milk Day. This topic is important for our economy section. So Department of Animal Husbandry has recently celebrated National Milk Day to commemorate the 101st birth anniversary of the father of white revolution in India, Dr. Verghese Kuryenji. Okay, so you know that on this 26th November, he was born, and he was accredited as the father of white revolution, because also he was also known as he's also known as the milkman of India, because his ideas and efforts led to the development of farmer cooperatives in dairy sector, and he was awarded Raman Magsaysay Award, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and even World Food Prize. India's this National Milk Day basically raises awareness about the need for milk in human lives. India is the world's largest milk producer. 22% of global milk production is contributed by India only, and about 198.4 million tons of milk production was made by India in 2019 and 20. So the next topic is China Indian Ocean Region Forum. So this topic is important for international relations. So recently China convened a first China Indian Ocean Region Forum. Basically it's a Chinese forum, and it is meant to counter India's strong influence in the Indian Ocean region. So SIDCA, which is an agency under the Chinese Foreign Ministry, organized this meeting. 19 countries from this region participated. Of course, certain other countries were not participating, like Australia, Maldives, and even some other countries also did not participate into this meeting. So Chinese presence in Indian Ocean region is rising. They have established a full-fledged naval base in Djibouti. Hambantota has also been acquired, Gwadar, and even certain
infrastructure projects in Maldives is also being made by China. But India's presence in Indian Ocean region is a very strong one, of course. And to make it even stronger, we launched this Sagar mission in 2015. Also, we launched this Indian Ocean Naval Symposium, which has been backed by the Indian Navy. And about if we see about Indian Ocean Rim Association, which is the organization against which China is now organizing a forum. So it's an intergovernmental organization which was established in 1997, and its secretariat is based in Mauritius, and it has become an observer in UN General Assembly and African Union both. China is a dialogue partner in the IORA, but it is not a full-fledged member. So IORA basically aims to promote sustainable growth and balanced development of this region, and to provide maximum opportunities for development, shared interest, and mutual benefits. It also aims to promote liberalization and remove impediments and lower barrier towards a free and enhanced flow of goods and services among this region. So the next topic is cultural heritage conservation. This topic is important for our art and culture and international relations topic both. So Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya has been conferred with the Award of Excellence at the UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. So this award is supported by a partnership between UNESCO and Nag Teng Fong Charitable Foundation since 2021. Don't confuse it that this award was already functioning, but now since 2021, the partnership between UNESCO and this charitable foundation has been established. So since 2020, UNESCO has also introduced a new category of special recognition for sustainable development. Basically, any cultural heritage which is being saved or which is being protected using sustainable development means is also being recognized through this particular award. Also, efforts of private individuals and organizations in restoration, conservation, and transformation of structures and buildings of heritage value is recognized by these awards. So for the 2002 to 2022, this is the list of the awards which has been mentioned here. Okay, so the next topic is Constitution Day, which is important for the polity section. So you know that on November 26th, we celebrate the Constitution Day because on this very day, the Constituent Assembly in 1949 adopted the Constitution of India. Of course, it came into effect only on 26th January 1950, but it was adopted on this very day. In May 2015, the central government decided that on the, of course, the 125th birth anniversary of B.R. Ambedkar ji, the government decided that November 26th must be observed as the Constitution Day so as to promote constitutional values among our citizens. Before this day, of course, it was celebrated as the National Law Day. Constituent Assembly held its first session on 9th December 1946, and it took over 3 years for them to draft the constitution. On 13th of December 1946, Objectives Resolution was moved by Nehruji, and it was later adopted as the preamble of our constitution. Drafting committee was chaired by Dr. Ambedkar ji, and the last session of Constituent Assembly ended on this very day of 26th November 1949. Why we had to wait till 26th January? Because since in 1930, Congress adopted this Purn Swaraj resolution on this very day. So we deliberately decided to wait for 2 months to adopt the Indian Constitution. Certain interesting facts about the Constitution of India is that it is the largest written constitution in the world. The original copy was handwritten, and each page of the Constitution has a gold leaf frame. Apart from that, there are other facts also which you can read on your own. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.